Hello, everybody. We are live again. How was your weekend? And Saddam Hasan is going to join us shortly. Just let me know if you guys can see me on Facebook or YouTube and Instagram. Are we live on all our platforms or not? So the problem is that here in Pakistan we have a lot of internet issues. So I hope कि आज हमें कोई भी इस तरह के इंटरनेट इश्यूज फेस ना करना पड़े क्योंकि हमारे जो CEO है he's not in Pakistan, so he doesn't have to face these issues, but he understands our problems. And that's why he's coming live today to answer all your problems and all your queries regarding business and anything that is somehow unsolvable for you guys. So let me know where you guys are from and how are you guys dealing. And आप लोग के यहाँ सर्दी आ गई है कि नहीं आ गई ये बताएं मुझे. We have a lot of people joining us, and I'm gonna let in Saddam Hasan just now. Okay, we already have questions coming in. Just wait ahead. Let me bring in the man himself who will answer all your questions. Hello, Saddam. क्या हाल है नम बिल्कुल ठीक आप कैसे हैं ठीक ठाक आज मैं बड़े लेट बैक मोड में बैठा हूँ so I just want to sit down and get as many questions answered as possible. So actually we already have one question for you. But before starting off with that, where are you sitting that laid back? I'm in Bali. Oh, that's nice. तो फिर तो आउटडोर एक क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए था. यार आउटडोर मैं सोच रहा था फिर मैंने कहा बहुत शोर होगा मैं थोड़ा वो हाँ, पूल के साथ ना बड़ा अच्छा वो एक सेटअप बना हुआ है उधर मैं अक्सर काम भी करता हूँ okay. and yeah If maybe I'm I'll not give wrong, you have a villa over there, right? I have a villa but it's rented out अभी बड़ा busy season चल रहा है Okay. so वो जो है मिड दिसंबर तक तो बुकड है so Oh, okay. बीच में मैंने एक ही दिन बुक किया मैंने कहा यार एक अपने विला में तो रात जो है गुजारूं एंड अभी तक मैंने अभी कोई रात नहीं गुजारी सो राइट नाउ आई एम इन अ होटल Oh, okay. या एज यू गाइस कैन सी Okay. पीछे बेडरूम सेटिंग है बट दिस इज अ रियली Exactly. गुड होटल Okay. But I बिल्कुल think the villas over there in Bali, they are amazing. या दिस वन इज स्पेक्टेकुलर आई विल शो यू गाइस लोग कहते हैं एयरबीएनबी में पैसे नहीं बनता इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी अभी So, तक हर मंथ हमारा तकरीबन ऑन एवरेज 27-28 डेज बुक जा रहा है सो इट्स रियली गुड मैं तो सरप्राइज हो गया था एंड आई बुक्ड इट आई बॉट इट विदाउट इवन बीइंग इन बाली रिमोटली सब कुछ हुआ है ऑल द लीगल स्टफ फॉर 3 years आई लीस्ड इट तो okay. या Oh, that's great actually. That's really nice. And would you suggest our viewers as well to invest in something like this? Because पहले पैसे कमाओ है ना फाइनेंशियल फ्रीडम दो you guys can invest as much as तो possible पैसे कमाना पाकिस्तान में आसान है या पैसे कमाना कनाडा में आसान होगा पैसे हर जगह पे होते हैं आपको बस कमाने आने चाहिए सो अगर आप पाकिस्तान में भी हो एंड यू कैन गेट क्लाइंट्स आउटसाइड व्हाई नॉट Mhm. यू नो Yeah. पैसों की कमी नहीं है आने के Mhm. तरीके आने लाने के तरीके आने चाहिए. So Yes. a big hi and everyone. So we have one question already for you from YouTube, and that's Ali Heather. Ali Heather is asking, "Hi Saddam, a 67% ROI in first year of business is a good return or not?" That's an amazing return. Tell me where to put my money as well. I would invest. 67% का मतलब ये है कि in 1.5 year you're getting a payback. That's amazing. So, Unheard of. मुझे बताओ कि ये कौन सा बिजनेस है जो 67% रिटर्न ले रहा है so Ali Heather, I think this question is for you, and we would love to hear from you as well for that. And okay, Yeah. yeah, thank you. So yeah. अच्छा एक और मैं अभी सोच रहा था मैं क्या या सो अच्छा जिन्होंने कॉन्फ्रेंस की टिकट नहीं ली हुई ना गो अहेड एंड चेक इट आउट realitycheck.co
That's the website. So what I was thinking is, मैंने कहा टीयर्स में मैं किस तरह डिवाइड करूं इसको. Then I was like यार एक टीयर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसमें आई विल डू कोचिंग कॉर्नर. ओके सो हियर्स द आइडिया. ठीक है ना, मुझे बताना अगर ये अच्छी आइडिया है, एंड मे बी बाकी भी लोग बता सकते हैं. मैं जो भी जिन लोगों से भी मेरी बात चली है ना, वो कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस पे स्पीकर आते हैं, वो अपना जो है एक जर्नी शेयर करके चले जाते हैं. सो ऑब्वियसली माय स्पीकिंग स्लॉट इज नॉट गोना बी लाइक दैट. आप लोगों को वैल्यू ना मिली तो मेरा नाम बदल देना. बट ऑन टॉप ऑफ दैट आई ऑल्सो फील लाइक कि कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ना वन ऑन वन वैल्यू नहीं प्रोवाइड होती. सो व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि मैं कोचेस इंट्रोड्यूस करूं जो कि एक स्पेशल टीयर के साथ वन ऑन वन कुछ एक स्लॉट्स बुक करें, एंड उनके जो भी क्वेश्चंस हुए, जिस तरह ये लाइव पे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना, वो एक इंटीमेट कॉन्वर्सेशन होगी विद द कोच के कहाँ पे है वो, किस तरह उन्होंने ग्रो करना है. दे कैन ब्रिंग ऑल देयर क्वेश्चंस, एंड उनको राइट अवे कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही एक लाइव कोचिंग मिल जाएगी. व्हाट डू यू थिंक? That's amazing. I mean, that is the point of having a conference, right? Networking, and then understanding someone understands your problem and give you an expert advice on that. एग्जैक्टली. Mm. एंड देखो स्पीकिंग से उनको तो अभी जो मेरे पास टॉपिक्स आ रहे हैं उससे तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के बड़े अपने यूनिक सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना. हो सकता है कि मे बी एआई के ऊपर एक टॉपिक चल रहा है लेकिन दे आर नॉट रियली डूइंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ एआई, या हो सकता है ऑपरेशन स्केलिंग के ऊपर टॉपिक चल रहा है लेकिन अभी उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे. सो जो भी उनकी यूनिक सिचुएशंस है ना, उसके लिए दे कैन बुक विद अ कोच. हमारे पास मल्टीपल डिफरेंट तरीके के कोच होंगे. हो सकता है कोई एक ईमेल मार्केटिंग में बड़ा अच्छा हो, दूसरा मे बी अपर स्केलिंग में बड़ा अच्छा हो. उनके साथ वो कॉल्स बुक करके एंड लाइव एक सेशन होगा, वहां पे ही हम सेपरेट सेक्शन जो है नेटवर्किंग एरिया, वहां पे स्लॉट्स बुक कर लेंगे, एंड उधर कोचेस बैठे होंगे, बस लोग जो है ना रोटेशन में आ रहे होंगे कि अपना सेशन अटेंड करके, एंड दे कैन गेट लाइक लाइव फीडबैक फ्रॉम कोचेस. Oh, Yeah. that's great. We did this in एक हमने पहले भी कॉन्फ्रेंस कराई थी कनाडा के अंदर, एंड दिस इज समथिंग वी डिड. मुझे अभी याद आ रहा है कि सबसे ज्यादा अच्छा फीडबैक उस कोचेस कॉर्नर से आया था क्योंकि पीपल वर एबल टू गेट आंसर्स राइट देयर एंड देन. Hmm. या. So that's a one-on-one session actually. यस. या, वन ऑन वन सेशन with the coach that they want. हमारे पास multiple होंगे, but again I have to find those coaches first. But I'm sure हमारे network के अंदर ही ऐसे लोग होंगे जो कि they're skilled, you know, they know about their products, not Mhm. products but like their topics, and they have expertise in a certain domain that they can share with other people. That's great. So I think you asked Ali Haider that which platform is he working in. So he just replied for that. He is saying that DAO, PropTech Real Estate Fractionalization Startup. This is where he's Fractionalization. getting, yeah, 67% ROI. Okay, so that, yeah, I mean that's like a high-end investment. Okay, yeah, 67%, that's amazing. Again, I would love to know more So yeah. about a startup like that. अच्छा, Okay. And startup में hit and miss भी होता है ना, like you might also sink in money. So if it's, I don't know how their reputation was. जो बड़े startups होते हैं that are like investor backed, usually they don't give you that much returns. लेकिन जहाँ पे थोड़ा ऐसे होता है, they're not able to secure a lot of investment, and it's like a wild idea. It's high risk, high reward. अगर तू चल पड़ा तो you can even get your money back in 1 year. नहीं चला तो goodbye to your money. That's oh, a okay. downside to it. That's a scary part. So we have another question from you. Can you give an example by Hamza Irfan again? He's here from YouTube. Hi Hamza. So he's asking you a question. Can you give an example of offers to attract cold audience regarding advertising services? Cold audience from advertising, yes. What's the question? Regarding advertising services. So it's not So from. regarding advertising services. Okay, so if you guys have advertising services, get a list. You can get a list anywhere. Just try to find lists online from conferences, or what you can do is apollo.com पे जाओ, and आपको LinkedIn से ही
काफी जो है ना scraped leads मिल जाएंगे, Mm-hmm. and pick up the call. Just give them a phone call, and the way you want to frame it is, अगर आप वैसी कॉल करोगे ना और आप कहोगे, hello John, is this John? Yeah, कि, are you guys interested in advertising services? वो phone आपके ऊपर बंद कर देगा. But if you call him and you're like, hey John, my colleague just gave me your number. Looks like you guys are in the XYZ space, real estate space. Yeah, जो भी है ना. Hey, listen, do you guys have capacity to take on 10 more advertising clients Mm-hmm. or 10 more clients at this time? वो कहेगा पता नहीं कौन कॉल कर रहा है. Yeah, looks like we can. Okay, perfect, John. Well, listen, we work with very selective real estate या जो भी उनकी industry है, um, people, and we help them get more clients. So if you can take on more clients, I think you'll be a right candidate, and we can ramp up your advertising. Would you be open to a 15-minute call with one of my experts? Okay. So what you have to do is just kind of lead them to a call with a closer. Okay, this is one example. अच्छा, let's say आपको शर्म आ रही है, आपको direct call नहीं करनी. The alternative is you get that list and आपको एक email sequence के अंदर उसको put करना. Now what I would recommend is आप close.com use करो, and close.com के अंदर the beautiful part is you can create like a workflow. तो let's say आपने 8-9 emails का workflow create किया, just hit them with value. मतलब उनको एक free ebook दो, this is $97 ebook, we're giving it to you for free. साथ में कुछ case studies share कर दिए दूसरी तीसरी email में. चौथे में उनसे एक call to action पूछ लिया कि हमारे साथ call book करो. So usually those kind of workflows work best. And the good thing about close is आपके पास 9 emails का sequence है. जब Okay. भी client या prospect respond करेगा ना, वो right away उसको उस sequence में से निकालेगा. So उसने respond किया, आपकी team या आपने direct उसको बस या call करना या call पे schedule करना. All right, Hamza, you have two answers for that. One is close, and the other one is Apollo. Yes, but in the crux of it, I guess one is like cold calling, and the, Yeah. Other just one is email. other one is email. But the way you get leads is either Apollo, or you just get acquire list online. Oh, okay, okay. I hope, Hamza, your question has been answered and you understand. Any other thing related to it can also be answered. So there's another one from Facebook. So Tayyab is asking, why are you looking so good today? And he didn't It's ask that for me. He said that for you. He for me. mentioned, Acha. he mentioned your name in the end. So yeah, Tayyab wants to know why you're looking so good today. What's the It's the change? Bali weather. I think बाली का मुझे गरम गरम मौसम जो है ना वो बड़ा सूट कर रहा है. So अच्छा being मेरे in तो the बाल अभी फटे हुए हैं, पता नहीं. I don't know how I'm looking good, but I guess I'll take the compliment. no, the perm is looking good actually. The perm, yeah. I perm my hair. वैसे मेरे बड़े सीधे बाल हैं. I hate those, so I just kind of perm them to get more of Okay. a So volume. you're Yeah, not naturally in Afro. I'm not, unfortunately not. All right. But So thank another thing, Tayyab, I think if you want to ever try on his style, so yeah, you got the hint. Now, other question is that you consider LinkedIn a very good platform. Is there any session gonna be on LinkedIn lead generation by you or your team? Okay, so for the conference, I am going to basically announce my topic pretty soon. लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ. I'm going to talk about 4 lead gens जो कि हमारे लिए काम किए. All of them can literally scale you up to 1 million if you do it correctly. अगर आपने next 3 साल उन 4 lead gens में से किसी के ऊपर भी ना focus किया, any one of them can get you to $1 million. Be at the conference. I'm not going to do a separate session on it. वो जो LinkedIn वाला है ना, I will share exact blueprint किस तरह हमने अपने business के अंदर उसको systematically implement किया and how we're getting results from it. And मैं आपके लिए rank भी करूँगा कि उन 4 में से कौन सा सबसे easy है, कौन सा सबसे expensive है, कौन सा आप लोग सबसे at scale कर सकते हो. Which one you should be doing if you're just starting out. So I want Okay. to answer like all of those questions. There's no short way that can just work for you from tomorrow. हर एक में थोड़ी effort डालनी पड़ती है. But you have to give it like 1 to 2 months. LinkedIn पे हमारे
दूसरे मंथ में जाके कई लीड्स आना शुरू हुए, एंड तीसरे मंथ में जाके हमने कई क्लोज करना शुरू हुए. So just keep in mind that it takes a while. All right, all right. So, Tayyab, there you go. Apart from that, we have another question from Jamil Iqbal. Well, this is a very interesting thing for another reason why you should attend the conference, because these topics are legit very important to understand, I guess. Yeah, and no one in the industry, मुझे आप कोई भी बता दो, okay? I can guarantee you, no one in the industry, first of all, has done these things themselves. वो आपको एक बस बता रहे हैं कि यार ये चीजें काम, एक हवाई बातें कर रहे हैं आप आपके साथ, Mhm. ठीक है? पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने लीड जेन सिस्टम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करके चलाया हुआ है. सो दैट्स फर्स्ट. सेकेंडली, अगर चलाया भी हुआ है, वो आपको क्यों बताएंगे? नो वन इन द Mm. इंडस्ट्री टॉकिंग अबाउट इट. आई विल शो यू ऑन द बैक एंड कि वाकई में किस तरह सेटअप करना है. मेरी कोशिश क्या है ना कि 30 मिनट्स में मैं किस तरह लोगों का रिएक्शन पकड़ूं कि यार दिस वाज द बेस्ट स्पीच or the best speaker I've attended at any conference. I think I can get that reaction. Wow. So that would be great, because your dream of making service agencies grow and bloom in Pakistan, I hope that will be the gist of it as well. Okay, conference se nikal ke, yeah. I mean, here's the thing. आधे घंटे में मैं उनकी जिंदगी शायद नहीं बदल सकता, Yeah. लेकिन एटलीस्ट उनको समझ आ जाएगी कि what does that path look like. उसके बाद उनकी अपनी एफर्ट्स हैं, वो इधर उधर से बहुत चीजें वो कर सकते हैं. प्लस we're going to talk about our program as well at the conference. लेकिन you don't want to miss the conference. And जो लोग सोच रहे हैं ना कि 2500 मैं स्पेंड करूं ना स्पेंड करूं for a ticket, come on man. If you can spend 2500 rupees, एक रेस्टोरेंट में जाके 2500 रुपीज लगते हैं आजकल ना. तो फिर तो आप ना ही करो तो बेहतर है. दिस But इज tell नॉट me फॉर. one thing, Saddam, one thing. You're doing this conference in Lahore, right? या. And we have a lot of people who are living either in Islamabad, Sialkot, Gujranwal. I get messages from all of these places. Why should they travel all the way to Lahore then? Yeah, first of all, this is the first conference we're doing. And as much as I wanted to do it in like multiple cities, Hmm. obviously एक सिटी से हम शुरू करेंगे. अच्छा, Okay. एक चीज मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि कॉन्फ्रेंस से पहले जो है ना, हम मीटअप्स करवाना शुरू कर दें इन डिफरेंट सिटीज. इफ यू गाइस वांट अ मीटअप इन योर सिटी, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स. इट रियली हेल्प्स अस, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट टाइम मैंने पोस्ट की थी कि कॉन्फ्रेंस अगर होगी किस स्पीकर्स को आप लेके आओगे. आप लोगों की सजेशंस के थ्रू ही आई वाज एबल टू गेट दो स्पीकर्स इन. ओके, सो आई वांट यू गाइस टू कमेंट which city you would potentially want कि हम उधर मीटअप करवाएं. आप लोग Okay. बताएंगे तो हम आएंगे. मैं उधर मीटअप्स करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस है, इट्स वेल वर्थ इट. जो पंजाब और केपी और उस जगह पे है ना, Hmm. आप लोग तो आओ. मतलब अगर पेशावर में भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे लग जाएंगे. जस्ट स्पेंड द नाइट देयर, नेक्स्ट डे यू कैन गो. हाँ, मुझे फील जो होता है वो कराची वालों के लिए होता है कि उनके लिए ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. बट वी विल do one event in Karachi, inshallah, in the future, if this one works out. तो जो बाकी जगहों से लोग हैं उनके लिए कोई excuse नहीं. You guys have to come to the event, because again we're doing things a bit differently than other conferences. सबसे पहले मैं speakers को push कर रहा हूँ कि आप अपनी normal जो journey और social media पे जो already content है, उससे हट के आप लोग content दो. That's the first thing. Secondly, we're doing breakout sessions. तो वो ज्यादा ट्यूटोरियल स्टाइल में होंगे. लेट्स से अगर फेसबुक एड्स पे बात चल रही है ना कि फेसबुक को मोनेटाइज कैसे करना है, जस्ट वन एग्जांपल. we're not going to talk about के how I monetize Facebook by doing XYZ. We're going to talk about के how to set up Facebook in a way कि आप 2 महीनों के अंदर उसको monetize कर दो. Yeah. दिस इज अ ब्रेकआउट सेशन फॉर्मेट. एंड तीसरा, जिस तरह हमने अभी आज ही मेरे जहन में आइडिया है कि कोचेस कॉर्नर. सो आई एम Hmm. एक्टिवली ट्राइंग टू थिंक ऑफ वेज कि किस तरह मैं एक वैल्यूएबल कॉन्फ्रेंस क्रिएट करूं जहाँ पे नेटवर्किंग हो ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स. एंड and one more thing, if you're starting out your freelancing journey, there's so many unknowns. आप
एक lonely journey होती है. You need a group to go Yes. with, right? To go move forward with. So at least आपका एक network ही अच्छा बन जाएगा just by being Yes. there. Yeah. So, just when I asked you this question, that people are going to be traveling from different cities to Lahore for the conference, and why should they do that? We have already, there's a guy named Mr. Shahriar Mustafa, and he's traveling from Islamabad to Lahore. Then we have Ibrar Hassan, who's traveling from Islamabad to Lahore for the conference again. And then we have Ghulam Mustafa from Jeddah. He is coming to attend the conference as well. So I think Wow. then we don't have any excuse for not attending it if you're from Karachi or from any other place. या अगर कोई जद्दा से आ रहा है ना तो तो फिर तो या अमेजिंग, या फिर तो और किसी का एक्सक्यूज नहीं बनता. लेकिन आई रियली अप्रिशिएट ऑनेस्टली जो भी डिफरेंट जगहों से आ रहे हैं. आई थिंक शहरियार हमारे वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी है. yes, एंड आई रियली लाइक द एनर्जी. जो लोग वाकई में सीरियस होते हैं ना, क्योंकि आई वांट टू हेल्प यू गाइस. लाइक मेरी इंटेंशन बड़ी वो वाली है कि मैं आप लोगों की हेल्प करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक आप लोग एक सुस्त बंदे की तरह ना एक जगह पे बैठे होंगे और बस फ्री में हर चीज के मैं पूछूं भी ना और ये मुझे दे दें. दैट्स नॉट गोना हैपन. yeah, यू हैव टू आस्क मी क्या yes, प्रॉब्लम है, ताकि मैं आप लोगों को सही जगह पे पॉइंट आउट करूं. एंड आई कैन रियली हेल्प यू गाइस. आई वांट टू हेल्प यू गाइस. मैंने अपनी इंटेंशन काफी दफा समझाने की कोशिश की है. एंड देयर इज अ फ्यू पीपल ग्रुप में जो वाकई में सीरियस हैं, जो कि मेरे यूट्यूब वाली स्ट्रेटजीज को भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, yes, मुझसे एक्टिवली क्वेश्चन करते हैं एंड उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं. yes. So yeah, that is. Asha, there is another question related to the conference. Now, Sheroz is asking, can you explain a bit more about the benefits of networking aspect at the conference, and will we be able to connect with other people in a timely manner and look for potential partnerships? Absolutely. So last year I went to this mastermind. Okay. And the mastermind costed me $70,000. Okay. And मैंने कहा यार क्या वाकई में फायदा है 2 करोड़ रुपए एक मास्टरमाइंड पे देने का. ये कौन लोग हैं जो 2 करोड़ रुपए एक मास्टरमाइंड के दे रहे हैं? इट डजंट मेक सेंस. एंड वो वही नेटवर्किंग इस तरह उस टाइप की चीजें की बातें कर रहे थे. आई मेट दिस वन गाय एंड वो मुझे कह रहा था कि मेरा जो अमेजोन का पैकेज है, अमेजोन इंडस्ट्री में ही था Mm-hmm. वो $34,000 का है हमारा पैकेज. हर एक क्लाइंट को वो $34,000 का पैकेज बेचते हैं. एंड Okay. तब तक मुझे लगता था कि हमारा जो 3,000 वाला पैकेज है ना, उससे हम ज्यादा कभी भी नहीं कर सकते. मतलब वो सीलिंग है, उससे नीचे का बेच देंगे लेकिन ऊपर कभी भी नहीं जा सकते. एंड उसने अपने सेशंस में बात की लिमिटिंग बिलीफ की. मुझे बड़ी दिल को लगी कि लोगों के लिमिटिंग बिलीफ होते हैं. जो 300 पे बैठा हुआ है वो शायद कहे कि यार 3,000 बहुत महंगा है. जो 3,000 पे बैठा हुआ हो सकता है कि 30,000 बहुत महंगा है. ये लिमिटिंग बिलीफ जो है ना, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यू हैव टू meet people who have basically removed that threshold, removed that ceiling, और वो दूसरी लेवल पे पहुंचे हुए हैं. एंड वर्चुअली चीजें सुनना एक अलग इम्पैक्ट है उसका, लेकिन जब आप फिजिकली किसी से मिलो और उनकी बातें सुनो और उनकी स्टोरियां सुनो और बैक एंड पे देखो कि क्या चीजें चल रही हैं, इट जस्ट ओपन्स योर माइंड टू अ होल न्यू एवेन्यू. तो अगर मैं 2 करोड़ स्पेंड करके वो लिमिटिंग बिलीफ अपना तोड़ के वापस आया हूँ एंड मैंने अपना टिकट साइज उससे भी ज्यादा बढ़ाया ना, दैट टू मी हैज सो मच मोर वैल्यू देन जस्ट नेटवर्किंग, जो गपशप वाली नेटवर्किंग होती है कि अच्छा Obviously. आप क्या कर रहे हो, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ. देयर विल बी 1,000 पीपल एट द कॉन्फ्रेंस, लेकिन एक ऐसा आपको मिलके जाएगा जिससे आप इतना कनेक्ट करोगे, आपको लगेगा कि यार इसने मुझे अपनी नेक्स्ट 6 महीने की जर्नी दिखा दी है. And Okay. that might not be me, that might not be any of the speakers. It might be someone who is in the same boat as you, लेकिन who is doing things a little bit differently और उसको थोड़े ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. Wow. And what do you think about partnerships? Do you think that our audience will be able to find um, any such prospect in the audience or anywhere where they can have genuine partnerships available for them? We talk a lot about partnerships from your videos, that how Right. it eases up your path towards your target and your service agencies as well. So do you think that's a possibility, or would you advise your audience to look into the conference from that perspective as well? Absolutely. The answer is absolutely.
अम, पाकिस्तान में अभी ये माइंडसेट शिफ्ट नहीं हुआ पार्टनरशिप्स वाला ना, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, आधे से मे बी आधे लोग जो है ना उधर वो अमेजोन स्पेस पे होंगे। लेट्स से आप अमेजोन स्पेस पे नहीं भी हो, ओके, आप मे बी एक सर्विस दे रहे हो, दूसरा वाला आप ही के ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को दूसरी सर्विस दे रहा है। What is wrong with you introducing this person to your clients and them introducing you to their clients? It's the perfect way कि एक बंदा, एक क्लाइंट जो आपको $10 दे रहा था, अब वो आपको $20 देगा। मतलब 10 आपको दे रहा है, 10 आपके पार्टनर को दे रहा है जो कि आपको कॉन्फ्रेंस पे मिला है और दूसरी सर्विस बेच रहा है। एंड सिमिलरली आप भी $20 कमाओगे क्योंकि 10 आपको अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं और 10 उसके क्लाइंट से मिल रहे हैं। जब मैं पार्टनरशिप्स को लेके चलता हूँ ना, इट हैज़ टू बी अ टू वे पार्टनरशिप। मतलब मैं आपको अपने क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और आप अपने क्लाइंट से इंट्रोड्यूस करवाओ। इसकी मैं सिंपल एग्जांपल क्या दूँगा, मैं गया डेंटिस्ट के पास एंड जस्ट रेगुलर क्लीनिंग के लिए ना, एंड उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे इधर लेफ्ट साइड पे, अनम शायद तुम्हें पता ही हो, तुम तो डेंटिस्ट ही Yes. हो, या वहाँ पे ना रूट काफी जो है वो मे बी वीक हो चुका हुआ था, ये क्या जो बचपन में आपको ब्रेसेस लगते हैं उसकी वजह से कभी कभार ये होता। सो दे सेड कि आई वुड गेट दैट चेक, लेकिन हम ये चीज़ नहीं करते, वी डोंट स्पेशलाइज इन दैट। लेकिन व्हेन आई लुक एट योर एक्सरे, दिस कैन बिकम अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। मैंने कहा अब टेंशन तो डाल ली है तुमने मुझे, ओके नो वरीज, वी हैव अ स्पेशलिस्ट जो कि दूसरे ऑफिस में बैठता है, इफ यू वांट आई कैन मेक द इंट्रोडक्शन। वो बहुत बिजी होते हैं, सो यू मे और यू मे नॉट गेट कंसल्टेशन इन दिस मंथ। मैंने कहा यार ठीक है, नहीं, आई नीड टू गेट दिस चेकड अप, एंड दे पुट मी इन अ कंसल्टेशन। एक स्केर्सिटी डाली कि यार शायद तुम्हें अपॉइंटमेंट भी ना मिले, एंड देन कैजुअली उन्होंने कहा यार $200 लगेंगे। I paid it, right? But हुआ क्या? They introduced me to that partner and I paid them $200. This is the beauty of partnerships is you Yes. are trying to basically watch out for the client के यार तुम्हारे भले में ये है कि लेट्स से हम आपके लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं ना, उससे पहले आप अपनी लिस्टिंग पे काम करो, अपनी Yes. इमेजेस वीडियो पे काम करो। सो मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ, वर्क ऑन दोज एंड देन वी कैन कम बैक टू योर एडवर्टाइजिंग। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, क्लाइंट भी खुश, आप भी खुश, आपका पार्टनर भी खुश। So this is how you create a win-win situation from partnerships. Yeah, this is something that I've learned from you a lot. Whenever I see your videos and everything, you have emphasized so much on this fact that don't be a jack of all trader. Be an expert in your own domain, and then you can refer to them to another expert. And that's not dividing your audience or dividing your client in that aspect as well. So this is something that you emphasize a lot. I've seen that in your Absolutely. videos. You know, one offer, one type of customer, one channel. That Yes. is all you need to focus on. The more you spread, the more you get distracted and the less Mhm. you grow. It's very Yes. counterintuitive. Okay, so we have another question from Jamil Iqbal, and he's asking that how do you or your company create a precise and brief? No, sorry. This is from the question from Jamil is, in your experience, what emerging trend in digital marketing should businesses be aware of in 2024? This is for future reference. I would say get into AI as early as possible, Mm-hmm. because it is going to be the next internet of Okay. of the future, right? So when I say AI, what, how can you leverage it? Let's say आप advertising करते हो, maybe just come up with ways to get AI involved into advertising. आपका काम आसान कर रहा है ना वो। Hmm. So for example, इस तरह के बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो AI के थ्रू आपके ये एड्स मैनेज कर रहे होते हैं, and now you can just, instead of doing it for one client, आप 10 clients को कवर कर सकते हो। So जब जहाँ पे AI आ जाता है आपके पास economies of scale आती हैं and you can potentially bring your price down। जहाँ पे Okay. हम पहले $500 में एक क्लाइंट को सर्व करते थे तो बहुत मुश्किल से प्रॉफिटेबल होते थे। अब वही एक कस्टमर सक्सेस मैनेजर या एड एक्सपर्ट जो है, वो इंस्टेड ऑफ 8 क्लाइंट्स दे कैन टेक ऑन लाइक 25 क्लाइंट्स। सो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी है एंड वी कैन इवन पोटेंशियली ब्रिंग आवर प्राइस डाउन। सेम थिंग विद इमेजेस, वीडियोस, हर चीज़ के अंदर हमने एआई को इंटीग्रेट कर दिया। कॉपी राइटिंग
हर चीज के लिए मैं एआई को वो करता हूँ. देयर इज अ वीडियो एंड अगेन आई वांट टू सी इफ देयर इज इंटरेस्ट ऑन इट. आई वांटेड टू डू अ यूट्यूब वीडियो जहाँ पे मैं एआई को यूज करके एक बिजनेस आइडिया जनरेट करूँ एंड फिर विद इन just by using AI, I want to create like the business within one day. वेबसाइट, उसकी ब्रांडिंग, किस तरह क्लाइंट्स ढूंढने हैं, We सब can कुछ do that. मतलब बिजनेस प्लान. Yeah, and I started doing a little bit of that. Yeah, it's not hard. It's Okay. that's how powerful AI is. So learn to speak to AI, and 2024 में बहुत potential opportunities खुलेंगी जो कि AI को tap into करेंगी. You don't have to necessarily create a software. जरूरी नहीं है. आप AI को अपने प्रोसेस के अंदर ही किसी तरह लेवरेज करके ना उसको एक अलग मोड में लेके जा सकते हैं. Okay. And what could be the second most important digital marketing aspect for businesses that you would make our audience aware of? Okay, look up for this thing. This thing might take you places in 2024. Yeah, always look for new platforms. मतलब ट्रेंड से पहले पकड़ो. अभी Such जिस as तरह, या अभी जिस तरह अमेजोन ने टिकटॉक और मेटा को ऑन बोर्ड किया, राइट? सो Mhm. लोग फंसे हुए हैं अमेजोन पीपीसी अकाउंट मैनेजमेंट. Move out of that. Like go Okay. into TikTok, Instagram, and this is not just for Amazon. Any kind of platform, just think about क्या उधर कंपटीशन है, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ दैट. सॉक है, शॉपी है. एशियन मार्केट में शॉपी इज सच अ बिग प्लेटफॉर्म, बट because we know about Amazon, we just stick to Amazon. Okay. So yeah, that's a nice answer to that. Acha, we have another question from Abdul Rahman. Abdul Rahman has been asking a lot of questions. Abdul Rahman, we're coming to all of your questions one by one. So the first question is, when should we start working on our own product launch? When should we start working on our own product launch? देखो अब्दुल रहमान, अगर मुझसे तुम Amazon की बात करोगे ना, मैं नहीं दूंगा जवाब. I'm sorry, because I want to empower you to become a service agency expert, not an Amazon expert. Even though I have my own brand, we do again almost 50, 60,000 a month there. But hey, just because I do Amazon doesn't mean कि ये channel Amazon के लिए है. उसके लिए बहुत गुरुज बैठे हुए हैं. आप सनी अली से बात करो, साकिब अजहर से. you know I will stick to my lane, and my lane is, you want to fast track growth on the service agency freelancing world, I'm your guy. Okay, so if Abdul Rahman is right now on Amazon PPC and Right. he wants to start his own service agency, what would you advise him? This is my question for Abdul Rahman actually. कि अब्दुल रहमान का अपना ब्रांड है और वो लेट्स से अगर अपनी एजेंसी क्रिएट करना चाह रहा है. Yeah. Yeah, that's a good question. Now I can answer that, Anam. So सबसे पहले तो आपने आइडिया को टेस्ट करना है. क्या मेरे प्रोडक्ट में और सर्विस में, व्हेन आई से प्रोडक्ट आई ऑलवेज मीन सर्विस, क्या मेरे सर्विस के अंदर जान है. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज, बहुत से लोग पीपीसी करते तो हैं, लेकिन क्या उनकी वाकई में पीपीसी अच्छी है? यू नो you can hire someone, you can do it yourself, doesn't matter. So the first thing you need to do is, within your LinkedIn या जहाँ पे भी या कहीं पे भी जहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, आपने कहना है, I've got this amazing new offer, and I'm only taking 10 clients. You don't have to pay me. I just want to get feedback from the market. Okay. And you do that test order for 10 people and see कि उनकी क्या reactions हैं. If 8 out of 10 say, yeah, this is amazing, that means you can move to the next step, which is के marketplace के ऊपर अपने आप को establish करना. Fiverr, Upwork, just like Amazon पे हम search find buy करते हैं ना ranking के लिए, सेम चीज फाइवर अपवर्क पे भी चलती है. सर्च फाइंड बाय, आपने अपने गिग को रैंक करवाना है फाइवर के ऊपर. अपवर्क पे इट्स मोर मैथमेटिकल. गेट अ गुड प्रपोजल, चैट जीपीटी से लिखवा लो, and just buy some connects and start reaching out to relevant jobs, and you will find one. It's just mathematical in a sense के out of 100%, 15 to 20% रिस्पॉन्स रेट आएगा, और उन सारे रिस्पॉन्सेज में से अराउंड 20-25% क्लोज होंगे. सो रफली लीड टू क्लोज रेशियो जो है वो 4% है. थोड़े मैं हायर लेवल नंबर्स थ्रो कर रहा हूँ, बट या 4 out of 100 people
that you reach out to should close. If it's less than that, there is something wrong with your proposal. Yeah, something wrong with the way you're approaching it. Okay, all right. That's a good advice. Acha, his second question is it good to have a partnership for a new brand launch with existing clients from the USA? Total 3 years of working experience. यस, या, बिल्कुल। ब्रांड्स के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो, एब्सोल्युटली, आई रिकमेंड दैट। लेकिन देयर इज दिस थिंग वेयर ब्रांड्स आपको ना वो स्टार्टअप ट्रैप में पुट कर देते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? वो आपको कुछ इस तरह कहेंगे कि यार, हमारे पास बहुत बड़े आइडियाज़ हैं, हमने बहुत प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं, आप ये वाला हमारे लिए सक्सेसफुल बना दो, आप बना सकते हो? आप कहोगे यस, एंड देन दे विल से ठीक है, तो हम ये क्यों नहीं करते? अभी हमारे पास थोड़ा बजट कम है, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल हो गया, आप प्रॉफिट में से एक्स परसेंटेज ले लो। Never Okay. say yes to that. Why? Because there's a lot of things that are out of your control. आप ब्रांड लॉन्च वो दूसरा ब्रांड करवा रहा है, इन ऑर्डर टू मिटिगेट देयर रिस्क वो आपको कह रहे हैं कि यार एक दफा हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, देन यू कैन पे अस। नो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। वरना मैं खुद अपने लिए क्यों ना करता, सो हमारे जो चार्जेस हैं देर देयर फॉर रीजन, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क। एंड यूजुअली उसका रिस्पॉन्स मैं ये देता हूँ कि so you want us to work for free, and the brand owner will get embarrassed. वो कहेंगे Okay. नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, हमारा बजट नहीं है। Just say, hey, listen, man, if you want to pay for value, this is the rate. Like we're going to get you to profitability, 5-6 महीने लगेंगे, but we we have to charge for the first 5-6 months. I'm happy to do a percentage deal after you're profitable, but before that, we're going to charge you a retainer. How does that sound? And if they still say yes, that means they're genuinely interested to give you a partnership stake in it. All right. Okay. Sounds good. So Zubair Ahmed is asking, what three advices you'll give to a person who wants to start PPC service agency in 2024? ओके, सो पहली दो तो मैंने कवर कर दी, ठीक है, कि एक आप टेस्ट ऑर्डर करो, दूसरा आपने मार्केट प्लेस के ऊपर थोड़ी अपनी डिपेंडेंस क्रिएट करनी है, फाइवर अपर के ऊपर। टेस्ट ऑर्डर से पता लगता है कि यार फ्री वाली चीज भी किसी को पसंद आ रही है, फ्री दी है लेकिन किसी को पसंद आ रही है। मार्केट प्लेस पे आप ये टेस्ट कर रहे हो कि कोई ना कोई वैल्यू है मेरे सर्विस की। लोग फ्री पे तो खुश थे, लेकिन अभी जब मैं पैसे चार्ज करने आया हूँ, लोग पैसे देने को थोड़ा बहुत तैयार है। ओके, उसके बाद वंस यू हैव अ फ्यू ऑर्डर्स फ्रॉम फाइवर, अपवर्क, जहाँ से भी, देन यू स्टार्ट डूइंग आउटरीच। एंड आउटरीच में मैंने ऑलरेडी बता दिया, लिंक्डइन, ईमेल, इससे आप कर सकते हो। आप कॉल करोगे तो इट्स कैन हैव हायर चांस ऑफ सक्सेस, बट अगेन, having calls is, doing calls is a little bit stressful at times. I can even imagine that. मेरे लिए भी calls करना बड़ा मुश्किल होता था, but you just have to get used to rejection. It's okay, it's a stranger on the other side of the call. जिस तरह लोग आपको मे बी कॉल्स करते होंगे कि आपको सर ये डील पसंद है, ये वो, एंड आप फोन रखते हो, इस तरह दूसरा बंदा भी रख सकता है, बट यू जस्ट हैव टू गिव इट अ ट्राई। हाँ, लेकिन अगर आपको वाकई में लगता है कि यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, फेसबुक पे बेतहाशा ग्रुप्स हैं, हाई टिकट सेल्स आप सर्च करो या सेल्स वाले ग्रुप सर्च करो, एंड लुक फॉर समवन हु कैन वर्क ऑन अ कमीशन। देयर आर पीपल आउट देयर, गोरे लोग जो कि आउटरीच करेंगे ऑन अ कमीशन बेसिस, दे वोंट इवन चार्ज यू एनीथिंग। आप उनको 10-15% दे दो ऑफ द डील, एंड दे विल हैप्पीली डू इट, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि आपकी सर्विस थोड़ी प्राइस अच्छी होनी चाहिए। All right. Okay. That's nice. Acha, Zubair, I hope your question has been answered and you understood. Ghulam Mustafa from YouTube is asking, in the domain of Amazon PPC and account management, could you please offer insights into diverse client acquisition platforms pertinent to this niche? इन द डोमेन ऑफ व्हिच सर्विस? दोबारा In the, sorry, in the domain of Amazon PPC and account management. अच्छा, सो कौन सा लीड जेन, कौन सा सोर्स इज द बेस्ट? Okay. um
Which lead gen source is the best? Honestly, it really depends. मैं आपको क्या बता रहा हूँ सबसे easiest way, and इसके लिए आपको मेरे conference पे आना पड़ेगा, just Yeah, to I'm figure sorry. out. He actually asked that can you please offer insights into diverse client acquisition platforms in this niche? Yeah, so he's asking कि यार मुझे थोड़ी डाइवर्सिटी दो ना, सिर्फ लिंक्डइन और ईमेल से तो बात नहीं बनेगी, या Yeah. सिर्फ फाइवर अपवर्क से बात नहीं बनेगी। और भी है, मतलब आप फेसबुक एड्स भी रन कर सकते हो, आप गूगल एड्स भी, अगर आपके पास बड़ी अच्छी वेबसाइट है, गूगल एड्स रन करो। What I would recommend is, and by the way, Anam, I think we have to stop in like 5 minutes, so we'll We take have a a few lot of more. questions. We still Um, we can do it next week. Guys, so we'll keep this, to 45 minutes, so that yeah, um, just so that we can get as many questions answered as possible. And बाकी मैं इंशाल्लाह next week मैं हर Sunday आऊँगा live, so this is not going to be a one and done thing. अच्छा, जहाँ पे डाइवर्सिटी आ गई ना क्लाइंट एक्विजिशन की, व्हाट यू गाइस आर आस्किंग इज कौन सा सबसे आसान तरीका है। सो सबसे आसान तरीका इज या एफिलिएट्स या पार्टनर्स, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर। आप लोग मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर पोस्ट करो, जस्ट आस्क अबाउट पार्टनरशिप्स, जस्ट गेट इन दैट हैबिट। जो पोस्ट हम अलाउ नहीं करते वो वाली पोस्ट होती है जिसपे आप कोई एक्सटर्नल कोई पेज जो है ना उसको प्रमोट कर रहे हो। लेकिन as long as you're not promoting a page and you're like, hey, listen, I just I do Amazon PPC. I'm just looking for a good network of people who do other Amazon services. There's nothing wrong with that. And talk to each other, एक दूसरे से सीखो, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करो, एक दूसरे के साथ क्लाइंट शेयर करो। लोग मुझे आके रीच आउट कर रहे होते हैं कि हमारे लिए आपके लिए हमारे पास एक क्लाइंट है, यू नो सो ठीक है। I mean I can benefit from your client, लेकिन there's a lot of other people who can benefit even more, and they would happily reciprocate, आपको अपने clients के साथ introduce करेंगे। okay. I think we should give 1 minute to per question now. We have Okay. really good questions coming up. So Hamad is asking, Hamad Akram, that how can we deal with clients in Amazon in spending? Like you said in last some webinar that deal with spending, but how? Spending is in our own hand. It will be linked with ACOS or ROAS or what? Please elaborate. Okay, so I'm not a big fan of the spending model. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है. What I like to tie it with is what the client wants. So अगर वो revenue है ना, it's like growth in revenue is what I would like to tie the deal with. आपकी growth हुई, हम ज़्यादा पैसा charge करेंगे. Okay, लेकिन अगर आपने spending के साथ करना है, which is like 20% of ad spend, 25% of ad spend, you just have to make sure the client knows के, hey, the budget is going to be approved by you, right? And सिस्टमेटिकली अगर हमने 30% ए कॉस्ट रखा हुआ है या एसीओएस रखा हुआ है, विल हैव टू मेंटेन दैट, एंड हम आपको स्टेबिलिटी इन इन ग्रोथ लेके आएंगे। एंड नेचुरली सी बात है, अगर ए कॉस्ट सेम रहेगा एंड वी आर ट्राइंग टू गेट मोर बिलिंग आउट ऑफ यू, we'll have to increase the spend, which means your sales will proportionately increase as well. Simple. Okay. उसकी वजह से the client should not have any issues. Okay. Asha, there's another question. I think this question will also be very interesting for the people. How do you or your company create a precise and brief case study to pitch to a client? And what pointers do we need to consider for it to be a good pitch? Okay. Case study का तीन tier formula है. What was the result? What happened? And how was it achieved? Okay, so uh, सबसे पहले you lead with the result. This client got 30% revenue increase. Yeah, this client got 90,000 in their first month of PPC with us. Then you talk about the process कि हमारा जो funnel dripping mechanism है, हमने वो सेट किया, क्लाइंट हमारे पास आया, they were only doing 30,000, but we set up the campaigns, हमने XYZ किया, आप steps explain करो, and because of that जो है सेकंड मंथ में ग्रोथ आई। एंड देन यू सॉर्ट ऑफ डिफाइन द हाउ, कि स्टेप्स तो आपने डिफाइन कर दिए, लेकिन किस तरह आपने उसके लिए ये सिचुएशन उसकी यूनिक किस तरह थी, एंड हाउ डिड यू come up with a unique solution. So
फोकस ऑन द रिजल्ट एंड देन गो बैक फ्रॉम देयर कि रिजल्ट कैसे अचीव हो, और उधर से फिर बैक स्टोरी बताओ कि हमने स्टेप्स क्या लिए, और फिर एक बैक स्टोरी कि क्लाइंट की सिचुएशन क्या थी. यूजुअली आप जब स्टोरी करते हो ना, तो इट्स द अदर वे अराउंड. आप कहते हो कि यार ये क्लाइंट आया, उसकी ये सिचुएशन थी, फिर हमने उसके लिए ये किया और एंड पे रिजल्ट ये निकला. लेकिन केस स्टडी में आपने रिवर्स करना है, क्योंकि पीपल आर मोर attracted to the result than the process, than what the situation was. Okay. I'm just trying to filter out as much as possible. Guys, I have noted down your questions. If they are not answered in this live session, we will bring up these questions back in the next one. Okay. So, Mehak from YouTube, sorry. Okay. Three more questions. Three more questions? That's great. So, Mehak from YouTube is asking that I have a printing shop business and I have two branches. I want to grow my business. Any ideas for me, sir? um, yeah, आप leaflets print करवाओ Mhm. and just try to distribute them on as many cars as possible. You know, that's like your gung ho door to door sales type model, right? के leaflets print करवाएं. अच्छा, दूसरा, think of या chat GPT में आप prompt डालो कि ऐसे और कौन से businesses हैं जो जिनके clients printing business पे interested होंगे. Hmm. Okay, maybe event management company है. Just giving you an example. Go to all those businesses, give them your card, and again partnership वाले मोड से आ रहा हूँ मैं कि hey listen, अगर कोई interested है, आप जो हमें referral दोगे, अगर कोई close हुआ, आपको हम इतना उसका percentage देंगे. They'll be interested. So these are like quick ways to explode without even using digital. Okay, I think again from your whatever I've learned from you, client testimonials, all of these things will also help her if she's going to event management or anything else जहाँ पे printing ज़्यादा useful होती है. बिल्कुल, yeah. Digital marketing, I think all of these things will help her a lot. या एंड ये थोड़ा B2B मॉडल भी हो सकता है. सो अगर प्रिंटिंग लार्ज स्केल पे करनी है ना, जस्ट फोकस ऑन इवन ऑफिसेस, गिव देम अ कॉल, उनको कहो कि आपके जितने भी प्रिंटिंग नीड्स हैं, लाइक वी कैन टेक केयर ऑफ दैट. यूजुअली B2B वाले जरा ज्यादा ऑर्डर वैल्यू वाले होते हैं. Okay. One other question from the conference point of view is, I have attended a lot of conferences, and what I learned is we don't know how to do networking. People just introduce themselves, and that what they call is networking. What is the right way to approach someone? Please give some good networking tips. I think it's the opening line and which one to approach. This is a good question. या आई थिंक आइस ब्रेकर रियली हेल्प्स. यू नो कि हम यूजुअली पूछते हैं ना, आप क्या करते हो, अच्छा कब से कर रहे हो. सो इसके लिए मैं क्या टिप्स दे सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ यूजुअली. I just go to the table and I start talking to people. It's that simple. You That's know, because okay, now you are someone that we have all I've seen myself that it's very easy for you to grab attention. You have that persona and a personality like that. But considering हम पाकिस्तानियों में introverts भी बहुत होते हैं, कुछ लोग घबराते भी हैं कि I'll go up to this person. I don't know if that person is going to reciprocate my gesture of meeting up. So that it does become a bit awkward for some people. What would you say to them? What should they start talking about, or just eavesdrop about what they're talking and then get into the conversation? What? yeah, don't get into your head too much. Just, walk up to the person. ये हाथ नहीं है, handshake. अस्सलाम वालेकुम, सदाम. आपका नाम क्या? अच्छा, ठीक ठीक. Okay. तो what brings you to the conference? क्यों आए आप? या अच्छा, आपका वैसे क्या गोल है इस कॉन्फ्रेंस से? Okay. Simple question. They will open up about their motives, and then you can say, जी जी बिल्कुल, मैं इस कॉन्फ्रेंसेस पे गया हूँ, जिस तरह ये कह रहे हैं ना, मैं इन कॉन्फ्रेंस पे गया हूँ, लेकिन इस वाले से मुझे बड़ी उम्मीद है क्योंकि एक्स वाई जी. कुछ भी बोल दो. इट्स सो इजी टू ओपन अप. लेकिन हाँ, मैं उनका पॉइंट समझ रहा हूँ कि networking becomes a bit difficult because we don't really know how to network. The main point is you have to figure out अपने बिजनेस कार्ड्स या तो प्रिंट आउट कर लें, या तो एक मैं आप लोगों को ऐप सजेस्ट करता हूँ हाई हेलो के नाम से. ओके, हाई हेलो आपको डिजिटल कार्ड लेके के देता है. एंड यूजुअली मैं क्या कहता हूँ कि इन द कॉन्फ्रेंस हम इतने लोगों से मिलते हैं ना, बाद में आपको कोई भी याद नहीं होगा. सो दो चीजें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं. हाई हेलो यूज करें एंड उधर नोट्स में लिखें कि इस बंदे से मेरी क्या बात हुई थी. जस्ट सिंपल वन लाइनर. Second cheese, take a selfie with them. I do this a lot of times because I'm like, hey, listen, man, I am so bad with like names. I'm not gonna remember it tomorrow.
Why don't we take a picture? Perfect. Simple. Okay. All Yeah. right. That's good. That's great. One Acha, last okay. And there's another one question, and I think a lot of service agency owners and all will relate to it as well. How do you counter an unhappy client considering we Pakistanis get fearful of foreign clients when it comes to that situation? यार, ये हमारे साथ बहुत, ये साल तो मैंने बहुत अनहैप्पी क्लाइंट्स के साथ डील किया ना. एंड यार, इस पे मैं पूरा 1 घंटा बोल सकता हूँ. इतने मेरे दिल को ये क्वेश्चन जो है. How to deal with unhappy clients? First thing you have to figure out is why are they being unhappy? क्या ये पहली दफा हो रहा है या ये एक रिकरिंग थीम है? अगर रिकरिंग थीम है, हो सकता है आपके प्रोसेस में कुछ मसला हो. दूसरी चीज, यू हैव टू लर्न टू हैव हार्ड कॉन्वर्सेशंस विद पीपल. कभी कभार आपने देखा होगा कुछ रेस्टोरेंट्स में लोग वैसी बदतमीजी करते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स बड़े मतलब अपने आप को एलीट या लग्जोरियस समझते हैं ना, वहाँ पे लोग थोड़ी तमीज से रहते हैं. सेम चीज आप मुल्कों में भी देख लो. पाकिस्तान में वही बंदा ज्यादा बदतमीजी करेगा वर्सेस अगर बाहर मुल्क में हो, वो रूल्स भी फॉलो करेगा, तमीज से भी होगा. Exactly. सो इट्स लाइक, अगर कोई तमीज के दायरे से निकलता है, you have to just let them know like what's the issue. You have to be able to do hard conversations with them, and थोड़ा सा पुश बैक देना होता है क्लाइंट को. अगेन और भी कुछ चीजें हैं, लेकिन I'll just kind of leave it at that. Figure out what the main core issue is. अगर तो वो रिकरिंग है, maybe they're right. And अगर कोई इधर उधर वैसी आपके ऊपर ना ज्यादा जोर डाल रहा है, you have to be able to push back a little bit. बदतमीजी ना करें, but just have harder conversations with them. कि मतलब अगर कोई फीडबैक दे रहा है ना कि ये तो तुम लोगों ने मैस अप कर दिया, ओके, hey, listen, I know you're frustrated. Maybe give me a bit more clear feedback, like what is wrong in the project. What do you feel can be improved upon? Let's start with that. All right. So last two questions now. One Just is from one more. last. This Okay, one. okay, okay. Yeah. So I've noted down all of your other questions, guys, from YouTube, from everywhere. मेरे पास पड़े हुए हैं, वो हम next session में आपके answer कर देंगे. गुलाम मुस्तफा पूछ रहे हैं, can you please share top 3 points in brief about how to play on Upwork? Okay. Number one, have a clear and concise क्या कहते हैं proposal. Okay. I wish I could share one, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है. When I say clear and concise, एक ही सर्विस लिखियो, not 10. You need to link either your portfolio or case studies. That's a must. And you need to mention something specific to the job that you're applying to. ये proposal is number one. Number two, uh, do enough follow-ups. अगर तो आपने कनेक्ट ज़ाय किए ही हैं और एक जॉब के लिए अप्लाई किए हैं, यार प्लीज एक स्प्रेडशीट रख लो. एटलीस्ट 3 फॉलोअप आपने करने हैं. लोग नए के पीछे भागते रहते हैं जो कि एग्जिस्टिंग पाइपलाइन में उसको प्रॉपर्ली नहीं कैटर टू करते. एंड देन थर्ड वन, व्हेन यू फाइंड आउट कि किसी ने डिसीजन ले लिया है, maybe ask them के hey, what made you lean towards that person? What could I have changed? You will get such good feedback from that person that you can implement within your proposal submission. Okay, all right. Thank you so much, Saddam. I hope you're having a good time in Bali. We had an amazing time with this Q&A. And for everyone who is messaging me, I have all the questions with me. We will be answering your questions. I can also type in the comments the answers Saddam is going to give for you. So yeah, thank you so much, Saddam. And thank you everyone for joining us as well. One last thing, Anam, please, if you haven't bought your ticket, realitycheck.co, come and let's make this a successful event. I want to help Pakistan. Please help me help Pakistan. That is what I will end with. So hopefully I can see you guys, and next week इसी time पे दोबारा हम live पे मिलते हैं. Okay. Thank you so much, guys. Thank you, Saddam. Take care and have fun. Bye bye.